আমি এটাকে সাপোর্ট করি না এবং আমাদের কেউ নেই। যদি খুঁজে বের করতে পারেন আমি কথা দিচ্ছি আমাদের যা ব্যবস্থা নেয়ার আমরা নেব। এটা আনন্দবাজারের মিথ্যে কথা। ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 3 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಮತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧು ಸಂತರು ಮೇ 24ಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು 17 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೇ 25ಕ್ಕೆ ತಮ್ಲುಕ್, ಕಾಂತಿ, ಘಟಾಲ್, ಜಾರಾಗ್ರಾಮ್, ಮೇದಿನಿಪುರ, ಪುರುಲಿಯಾ, ಬಂಕೂರಾ, ಬಿಷ್ಣುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ದಿನವಾದ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಢಮ್ಢಮ್, ಬರಾಸತ್, ಬರ್ಶಿಹತ್, ಜಯನಗರ, ಮಥುರಾಪುರ, ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್, ಜಾದವ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಅಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ತಮಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಮಮತಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್, ಭರತ್ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂತರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಮತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಕೂರಾದಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ ಮಮತಾ, ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಭರತ್ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಸಂಘ ಕೂಡ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಮಮತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇವರು ರೇಜಿನಗರ ಮತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 3 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. যারা ইলেকশনের সময় বড় বড় কথা বলেন আর মিথ্যে কথা কাগজে লেখেন, আমার তো নলেজেই নেই কোনো জায়গায় কোনো গন্ডগোল হয়েছে বা কোনো আশ্রমের পর কেউ আক্রমণ করেছে। আমি এটাকে সাপোর্ট করি না এবং আমাদের কেউ নেই। যদি খুঁজে বের করতে পারেন আমি কথা দিচ্ছি আমাদের যা ব্যবস্থা নেয়ার আমরা নেব। এটা আনন্দবাজারের মিথ্যে কথা। আমার যদি কোনো গন্ডগোল আমার কোথাও হয় বাংলায়, আমার কাছে তো একটা ইনফরমেশন আসে, আমার কাছে তো কোনো ইনফরমেশন এলো না, আমি তো জানতে পারলাম না। আমাকে একজন সাংবাদিক বলল সে নাকি এনকোয়ারি করে দেখেছে, এটা ওদের নিজেদের পারিবারিক ব্যাপার। অনেকে আপনারা জানেন জমি দিয়ে দেয় নানা ধর্মীয় কাজে, তারা কাজে লাগান, এটা এরকমই একটা কোনো ব্যাপার। এটার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমি বলবো না যে অন্য কেউ করেছে, যেহেতু আমার জানা নেই। এটার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই আর থাকবেও না। মনে রাখবেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি আজও ওই সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে খবর দিয়েছিলেন আপনাদেরই জেলার মানুষ ডক্টর সুব্রত মৈত্র। একদিন মধ্যরাতে ফোন করে আমায় বললেন, দিদি আমাদের বাঁচান। আমি বললাম কি হয়েছে? বলল দেখুন না কতগুলো লোক এসে এই বাড়িটা দখল করে নিচ্ছে। আমি যে কোনটা? বলল স্বামী বিবেকানন্দের অরিজিনাল বাড়িটা। আমি বললাম সে কি? বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, একদিনের মধ্যে ওই বাড়িটা পুরসভাকে দিয়ে আমি কিনিয়ে নিয়েছিলাম। কারণ আমাদের পুরসভা ছিল আমাদের রাজ্য সরকারের টাকায়, পুরসভার টাকায়। সিস্টার নিবেদিতার বাড়ি দখল হয়ে গিয়েছিল বাগবাজারে। আমি নিজে 2 বার গেছি এবং আমাদের রাজ্য সরকারের টাকা দিয়ে, কলকাতা কর্পোরেশন আমাদের টাকা দিয়ে নিবেদিতার বাড়ি আমি কিনিয়ে দিয়েছি। আর একটা মনে রাখবেন, দার্জিলিংয়ে যেখানে নিবেদিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই বাড়িটা আপনারা অনেকে নিশ্চয়ই দেখতে যান, সেই বাড়িটাও কিন্তু দখল হয়ে গিয়েছিল। আমি মিটিং ডেকে, তখন বিমল গুরুং ছিল জিটিএতে, আমি বললাম হবে না,
তুমি এক কাজ করো, আমি তোমাকে একটা নতুন পাল্টা বাড়ি দিচ্ছি, আমার গভর্নমেন্টের বাড়ি, কিন্তু নিবেদিতা যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন সেটা তার স্মৃতি জড়িত, সেটা থাকবে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে। আমি কিন্তু করে দিয়েছিলাম। মনে রাখবেন, ওঙ্কারনাথ মন্দির তারা একটা তোরণ করতে চেয়েছিলেন, আমি সেটাও করে দিয়েছি। বেলুড়েও অনেক জেটি তৈরি করে দিয়েছি। যে যেখানে বলেছে, মন্দির হোক, মসজিদ হোক, গুরুদ্বারা হোক, গির্জা হোক, জায়ের থান হোক, মাঝি থান হোক, আমরা কখনো ভেদাভেদ করি না। আমাকে তো চিরকালই ওরা বলে যে আমি নাকি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি না। আমি জানি না জন্মেই আমার নামটাকে দিয়েছিল আর পদবিটাকে দিয়েছিল। ভাগ্যিস হিন্দু ছিলাম বলে, তা নাহলে কবে বলেই তো এ বিদেশ থেকে এসছে, নয় এনআরসি হয়ে এসছে বলে সেটাকেও যুক্ত করে দিত। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কোনোদিনও বলি না আমিও কিন্তু একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের, হিন্দু পরিবারের মেয়ে, জেনে রাখবেন। কিন্তু আমি নিজের পরিচয় কখনো দিই না, তার কারণ আমি বিজেপির থেকে সার্টিফিকেট নিতে যাব না। আমি হিন্দু না, আমি মুসলমান না, আমি শিখ না, আমি খ্রিস্টান, আমি মানুষ। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমি মানুষ।